Hello everyone, welcome to you all my channel Easy Learning Tutorial. Here we will read about the programming languages. So this is the first video of the programming languages. In this video we will study about the programming languages and the history of the programming language. So first we discuss the unlocking difficulties. So most of the students don't understand what is the compiler. The compiler is a software, that means computer software that translates, means compiles source code written in high level language, example C, C++, Java and Python, into a set of machine language instruction. मीन्स अगर हम इजी तरीके से समझे कि कोई भी लैंग्वेज को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, उन एक ट्रांसलेटर नीड होता है उस लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, उसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं. तो इस तरह इन कंप्यूटर एरिया में, मीन्स कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको कंपाइलर बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी समझता है, बट हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखते हैं. तो जो भी सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वही सॉफ्टवेयर को हम कंपाइलर बोलते हैं. तो नेक्स्ट इज द लैंग्वेज. A language, a system of conventional spoken or written symbols by means of which human beings, as members of a social group and participants in its culture, express themselves. Means अगर means express ourselves, will need a language. हमको एक लैंग्वेज ज़रूरत होता है. हम हमारा एक्सप्रेशन को दूसरे के सामने लाने के लिए जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो एक माध्यम से होता है. तो इस तरह कंप्यूटर से हम इंसान जो ह्यूमन बींग्स रिलेटेड करता है, मीन्स इंटरेक्ट करता है थ्रू द लैंग्वेज. सो दिस इज द लैंग्वेज. एंड इन दिस वीडियो विल ऑल्सो डिस्कस द हिस्ट्री, दैट इज द स्टडीज ऑफ अ क्रोनोलॉजिकल record of events. The next slide is, so what is programming? The process of developing and implementing various sets of instruction to enable a computer to do a certain task. Means हम जैसे कोई भी टास्क हम कंप्यूटर को देना चाहेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, जो भी लाइक हम फोटोशॉप यूज करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड होता है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर थ्रू से ही कंप्यूटर से बात कर सकते हैं. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीड होता है. तो उसी से द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वेरियस सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एनाबल ए कंप्यूटर टू डू ए सर्टेन टास्क. कंप्यूटर को कोई भी टास्क देने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं. द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और रिटन ए प्रोग्राम. The next slide is about what is program. A program, in simple way, a program is written as a series of human understandable computer instruction that can be read by a compiler and a linker. We will later discuss about what is the linker. So here we discuss the programming, what is the programming language and what is the program. Next we will discuss about the history of the programming. From 1842 to 1843, that is first computer program created by Ada Lovelace, that is work on the Charles Babbage analytical engine, a complete detail, a method for calculating Bernoulli numbers with the engine. Means we know the father of computer is the Charles Babbage. When he developed the analytical engine, so उनके जो एनालिटिकल इंजन के लिए जो फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड हुआ था उसे आडा लवलेस ने डेवलप किए थे. तो बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आता है कि फास्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय आडा लवलेस.
So after the first language developed, there are several languages also developed, that is Fortran, COBOL, and Pascal's, like other languages has also been developed. In the 1972, the C language was developed. C language created by Dennis Ritchie of Bell Labs. Currently the world's most popular programming language. Two many leading languages are derivatives, including C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, and Python. The system programming, computer, game development, and the Unix operating system is also developed by the C programming languages. We can say that the C is the mother of all programming languages, which is developed by Dennis Ritchie in 1972. In 1983, the another language developed, that is C++. The formally C with the classes is known as the C++, created by B. Jan Strostrup, an extension of C with the enhancements such as a class, virtual functions, and templates. The primary use: commercial application development, embedded software, server client applications, video games, etc. Used by Adobe, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer. In the year of 1994, that the Java programming language was developed, that is by Java creator James Gosling of Microsystem, made for an interactive TV project, cross-platform functionality. Second most popular language behind the C, is developed for Android and OS apps, primarily used in network programming, web application development, software development, graphical user interface development. In 1995, the PHP language developed, that is server-side programming language, that is personal homepage, created by Rasmus Lederoff, for building dynamic web pages, most widely used open source software by enterprises. Primarily used building, maintaining dynamic web pages, server-side development, and used by Facebook, Wikipedia, Dix, WordPress, and Joomla. तो सर्वर साइड में जो भी प्रोग्रामिंग लिखा जाता है वो PHP से लिखा जाता है. अभी तो पाइथन भी यूज किया जाता है. There are other programming language they also developed. So basically these are the programming languages. Laterally we'll discuss all the things about the programming languages like C, C++, Java, and I will show you all the details about the C programming language, Java programming language, and other programming languages. मैं आगे भी ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.